So, good afternoon, students. Today's topic of video demonstration is norma bezalis. What is norma bezalis? That is, it means when we view the skull from below, right? So, if I invert the skull, see, this is the right half of skull, and this is the left half of skull. And when I view it from inferior side, so the right half comes there and left half comes here. Okay, so now I'm going to divide the norma bezalis into three parts: anterior, middle and posterior part. So how I'm going to divide this is by the anterior part. It is formed by hard palate. The anterior part of the norma bezalis, it is formed by the hard palate. The middle part, it extends from the posterior border of the hard palate to to a arbitrary line passing through the anterior margin of the anterior margin of foramen magnum. I repeat, the middle part of norma bezalis, it extends from the posterior border of the hard palate to the arbitrary line passing through the anterior margin of the foramen magnum, right? And the rest of the part of the norma bezalis comes in your posterior part. Now let us discuss these parts one by one. First of all, we are going to do the anterior part of the norma bezalis. So this is the anterior part of the norma bezalis, right? It constitutes your alveolar arcs. These are your alveolar arc. This is your alveolar arc. ठीक है? And second thing, it is constituted by the hard palate. अब hard palate में हमें कौन कौन सी bones दिख रही हैं? You can see here, these are the palatine processes of maxilla. These are the palatine processes of maxilla, and these are the horizontal plates of the palatine bone. Now, so these are the palatine processes of your maxilla, and these are the horizontal plates of the palatine bone. Now, let us see, these are some pits. Can you recognize these pits? These are for the palatine glands, right? Now, this is a cruciform sulcus. This is a cruciform sulcus. Cruciform suture, sorry. So, the cruciform suture, it is formed by the intermaxillary. This is your intermaxillary suture. Here comes your palatomaxillary suture, and here is your interpalatine suture. The intermaxillary suture is between the palatine processes of maxilla, right? The interpalatine suture, it is between the horizontal plates of the palatine bone, and the palatomaxillary suture, it lies between the palatine processes of maxilla and the horizontal plate of palatine bone. Now, this is the posterior border. This is the posterior border of the hard palate. It is free, you can see, it is free. यहाँ पे posterior border पे in the median plane there is one projection. This is known as posterior nasal spine. This is known as posterior nasal spine. This thing is known as posterior nasal spine. Now, in front of this posterior border, in front of this posterior border, here is a curved ridge. Here is a curved ridge. This is known as palatine crest. This is known as palatine crest. Now, let us come to the foramina in the anterior part. So, first of all, this is your incisive foramina. This is your incisive foramina. Now, in the incisive foramina, there are two canals. There are two incisive canals. One is for right side and one is for left side. They pierce the walls of the incisive foramen, right? The incisive canals, they pierce the walls of the incisive foramen. Usually left incisive canal lies in the anterior part, and the right incisive canal, it lies in the posterior part of the incisive foramen. Now, the another foramina are the greater palatine. These are the greater palatine foramina, and these small foramina. Can you appreciate this? These are your lesser palatine foramina. So, the greater palatine foramina, it lies just behind the palatomaxillary suture. It lies just behind the palatomaxillary suture, and it leads to a groove
it leads to a groove that opens in at the incisive fossa. And the lesser palatine foramina, they lie just behind the greater palatine foramina, and they pierce the pyramidal process of palatine bone. This is the pyramidal process of palatine bone, and the lesser palatine foramina, they are piercing the pyramidal process of palatine bone. And the alveolar arc, it bears the sockets for the root of teeth. You can see it bears sockets for the root of the teeth. Now let us come to the middle part of the norma basalis. I have told you earlier the extent of the middle part of the norma basalis is from the posterior border of the hard palate to the anterior margin of the foramen magnum. Now the middle part of the norma basalis, it is divided into a median part and a lateral part. It is divided into a median part and a lateral part. So first of all, we will be dealing with the median part. In the median part, you can see this is a bone known as vomer. This is your vomer bone. This is your vomer bone, right? You can appreciate the posterior border of vomer bone is free. The posterior border of the vomer bone is free, and it is separating two posterior nasal apertures. These are two posterior nasal apertures. Okay, so the inferior border, as I have kept the skull in inferior, I am showing you the inferior surface of the skull. So this will be the inferior border of the vomer bone, and this will be the superior border of the vomer bone. Okay. Now when I keeping the skull in anatomical position, you can see this is your vomer bone. Okay. This will be the lower border of the vomer bone, and this will be the superior border. Now when I invert this, now you can easily correlate the inferior border of vomer and the superior border of vomer. So the inferior border of vomer, it articulates with the hard palate, and the superior border of vomer, it is dividing into two ala. It is dividing into two ala, and it articulates with the rostrum of the sphenoid bone. Okay. Now next thing, this is a broad part of bone. This is a broad part of bone. It is formed by the fusion of the body of sphenoid and the basilar part of the occipital bone. Okay. And you can appreciate here, here is a pharyngeal tubercle. Here is a pharyngeal tubercle present, right? Now let us cover the lateral part of the lateral part of the middle part of the norma basalis. Now in the lateral part, there are mainly two bones. One is your sphenoid bone and another is your temporal bone. Now sphenoid bone के दो पार्ट्स आते हैं बेसिलर पार्ट में. एक तो आता है दिस इज योर टेरिगोइड प्रोसेस, एंड दिस इज योर ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड. दिस इज योर ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, राइट. और टेम्पोरल बोन के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? वन इज योर स्क्वेमस पार्ट. दिस इज योर स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. दिस इज योर टिम्पैनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, एंड दिस इज योर पेट्रस पार्ट. एंड स्फेनॉइड बोन का एक और पार्ट, यहाँ बॉडी भी इंक्लूड होती है, ठीक है. स्फेनॉइड बोन के भी 3 पार्ट्स आएंगे, टेम्पोरल बोन के भी अपने पास 3 पार्ट्स आएंगे इन द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसालिस. नाउ सबसे पहले हम टेरिगोइड प्रोसेसेस को कवर करते हैं. दिस इज योर टेरिगोइड प्रोसेस. ओके, दिस इज योर टेरिगोइड प्रोसेस. नाउ जो ये टेरिगोइड प्रोसेस है, इट इज़ डिवाइडिंग इनटू मीडियल टेरिगोइड प्लेट एंड अ लेटरल टेरिगोइड प्लेट. ओके, सो जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट है, यू कैन सी हियर द मीडियल टेरिगोइड प्लेट, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर होगा. So here you can appreciate this. This is your medial pterygoid plate. The superior border of the medial pterygoid plate, it divides and it lodges a triangular depression. It lodges a triangular depression. Here you can appreciate this triangular depression. This is known as scaphoid fossa.
This is known as scaphoid fossa. And the upper part and the lower border of this medial pterygoid plate, it shows a projection. This is known as pterygoid hamulus. ठीक है, you can see here, this is your pterygoid hamulus. It is running backwards and laterally. It is running backwards and laterally. So the medial, you can see the medial pterygoid plate and the lateral pterygoid plate, they are fused anteriorly. They are fused with each other anteriorly, and posteriorly they are free from each other. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये फॉसा है, इसको pterygoid fossa कहते हैं. इसको pterygoid fossa कहते हैं. ठीक है, अब दिस इज़ जो मीडियल pterygoid प्लेट. ठीक है, मीडियल pterygoid प्लेट की ये मीडियल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है. ठीक है, ये मीडियल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है. जो मीडियल pterygoid प्लेट है वो नीचे यहाँ पे एक वेजाइनल प्रोसेस देती है. वो यहाँ पे एक वेजाइनल प्रोसेस देती है. ठीक है, मीडियल pterygoid प्लेट के यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन होती है. यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन होती है, वो भी यहाँ तक आती है. तो क्या होता है कि जो वेजाइनल प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, जो वेजाइनल प्रोसेस है उसके इन्फीरियर सरफेस पे एक ग्रूव होता है. ठीक है, that is converted into a canal via the perpendicular plate of palatine bone, and that canal is known as palatino-vaginal canal. ठीक है, palatino-vaginal canal यहाँ पे, can you see this? This is your palatino-vaginal canal. It is between the perpendicular plate of palatine bone and the vaginal process of medial pterygoid plate. और जो ये पैलेटिनो-वेजाइनल कैनाल है, इट ओपन्स इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन फॉसा. ठीक है, अब एक और कैनाल करते हैं हम, जो ये अपनी वोमर बोन थी. ठीक है, वोमर के जो ये एला है, एला के लेटरल बॉर्डर पे, ठीक है, एला के लेटरल बॉर्डर के साथ जो वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगोइड प्लेट है, एक कैनाल बनाती है जिसको हम वुमरो वेजाइनल कैनाल कहते हैं. ठीक है, नाउ ये अपनी मीडियल टेरिगोइड प्लेट के बारे में इतना ही था. नाउ लेट अस कम टू द लेटरल टेरिगोइड प्लेट. लेटरल टेरिगोइड प्लेट में भी दिस इज़ द मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल टेरिगोइड प्लेट एंड दिस इज़ द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल टेरिगोइड प्लेट. और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसका, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल टेरिगोइड प्लेट, देयर इज़ अ प्रोजेक्शन इन द मिडल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर. दिस प्रोजेक्शन इज़ नोन एज pterygospinous process. This projection is known as pterygospinous process. Now let us cover the lateral part. In the lateral part you can see this is pentagonal in surface. This is pentagonal in shape. ठीक है, जो एंटीरियर मार्जिन है इसकी, जो एंटीरियर मार्जिन है, ठीक है, इट इज़ फॉर्म, दिस इज़ योर inferior orbital fissure. दिस इज़ योर inferior orbital fissure. जो एंटीरियर मार्जिन है, इट इज़ फॉर्मिंग द posterior boundary of inferior orbital fissure. Now this is your anterolateral margin. This is your anterolateral margin. The infratemporal crest. Anterolateral margin is known as infratemporal crest. Now comes your posterolateral margin. This is your posterolateral margin. It is articulating with the squamous part of the temporal bone. It is articulating with the squamous part of the temporal bone. Now this is your posteromedial margin. This is your posteromedial margin. The posteromedial margin of greater wing of sphenoid, it is articulating with the petrous part of the temporal bone. And the anteromedial margin, this is your anteromedial margin, it is articulating with the pterygoid process. It is articulating with the pterygoid process. Now जो पोस्टीरियोमीडियल मार्जिन है उस पे हमें बहुत सारे फोरामिना दिख रहे हैं. ठीक है, पोस्टीरियोमीडियल मार्जिन के अलॉन्ग यू कैन सी वेरियस फोरामिना. First of all, this is a oval foramina. This is an oval foramina situated posterolateral to the pterygoid process. Situated posterolateral to the pterygoid process. This foramina is known as foramen ovale.
Next is your this foramen, this small rounded foramen. This foramen is known as foramina spinosum. It is situated posterolateral to the foramen ovale and it is situated anterior to the spine of sphenoid. Okay, sometimes there is one emissary sphenoidal foramen. There is one emissary sphenoidal foramen. That foramen lies between the scaphoid fossa and the foramen ovale. That foramen lies between the scaphoid fossa and foramen ovale, and that foramen in the cranial cavity. This is your emissary sphenoidal foramen. In the cranial cavity, it lies between the foramen rotundum and foramen ovale. This is your foramen ovale and this is your foramen rotundum. So it lies between the foramen rotundum and foramen ovale in cranial cavity. This is your emissary sphenoidal foramina. Sometimes there is another foramen between the foramen ovale and foramina spinosum, that is foramen innominatus, canaliculus innominatus. ठीक है, it is sometimes present. Now let us come to the at the junction of posteromedial margin and the posterolateral margin, there is one projection. This is your spine of sphenoid. This is known as spine of sphenoid. Now let us do the tympanic part of temporal bone. This is your tympanic part of temporal bone. You can see here the anterior surface of this tympanic plate, it is concave. The anterior surface of this tympanic plate is concave and it forms the posterior boundary of mandibular fossa. This is your mandibular fossa. And it articulates with the head of the mandible, right? So जो ये anterior surface है tympanic plate की, it forms the posterior boundary of the mandibular fossa. You can see यहाँ पे mandibular fossa पे head of mandible articulate करता है, ठीक है. This is your head of mandible. Now जो posterior surface है tympanic plate की, ये तुम्हारा external acoustic meatus है, ठीक है. जो posterior surface है, it is going to form the anterior wall, floor and some part of the posterior wall of the external acoustic meatus, ठीक है. अच्छा, अब जो upper border है tympanic plate का, it lies at the scamotympanic fissure. This is your scamotympanic fissure. तो क्या होता है, कई बार नहीं, यूजुअली क्या होता है, जो पेट्रस टेम्पोरल बोन है वो इस स्केमोटिम्पैनिक फिशर में आके डिप कर जाती है, ठीक है. कैन यू अप्रिशिएट दिस स्मॉल बोन इन दिस फिशर? सो उससे क्या होता है, पेट्रस पार्ट ऑफ टिम्पैनिक बोन जब इस फिशर में आके डिप करती है, इट डिवाइड्स दिस फिशर इनटू पेट्रोस्केमस सूचर एंड पेट्रोटिम्पैनिक सूचर. पहले ये स्केमोटिम्पैनिक फिशर था, जब इसमें पेट्रस बोन आके डिप करी सो पेट्रोस्केमस फिशर बन गया और एक पेट्रोटिम्पैनिक सूचर बन गया, ठीक है. नाउ लेट अस डू अबाउट द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. अब स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में हमें क्या क्या मिलता है? इट इज़ फॉर्मिंग सम पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फॉसा. हियर इट इज़ फॉर्मिंग सम पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फॉसा एंड दिस पार्ट ऑफ द स्क्वेमस टेम्पोरल बोन, इट फॉर्म्स द रूफ फॉर द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा. इंफ्राटेम्पोरल फॉसा क्या होता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा. वन थिंग मोर आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो तुम्हारी टेरिगोइड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, pterygoid processes, they articulate with the posterior part of body of maxilla, ठीक है. They are articulating with the posterior part of body of maxilla and they are separated by a fissure. This is known as pterygomaxillary fissure. क्यों? क्योंकि वो टेरिगोइड प्रोसेस और मैक्सिला के बीच में है, इसीलिए इसको कहते हैं टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, ठीक है. नाउ comes your petrous part of the temporal bone. This is your petrous part of the temporal bone. It is triangular in shape, ठीक है.
So at the junction of greater wing of sphenoid and at the petrous part of temporal bone, there is one groove. Here is one groove. This is known as sulcus tubi. This is known as sulcus tubi. यहाँ पे जो it lodges the cartilaginous part of the auditory tube. It lodges the cartilaginous part of the auditory tube, and at the lateral end of the sulcus tubae, the cartilaginous part is continuous with the bony part of the auditory tube. और जो bony part है auditory tube का वो तुम्हारी petrous bone में पड़ा होता है. ठीक है. Okay. At the junction of body of sphenoid and petrous part of temporal bone, here is one large foramen. This foramen is known as foramen lacerum. ठीक है. This foramen is known as foramen lacerum, and at the apex of petrous part of temporal bone, it is pierced by the, ये apex है, ठीक है, टेम्पोरल बोन का. इट इज़ पियर्स्ड बाय द अपर एंड ऑफ कैरोटिड कैनाल. इट इज़ पियर्स्ड बाय द अपर एंड ऑफ कैरोटिड कैनाल. ठीक है. और ये तुम्हारी इंफीरियर सरफेस है पेट्रस टेम्पोरल बोन की. इसके पोस्टीरियर एंड पे यू कैन सी दिस फोरामिना. दिस इज़ नोन एज कैरोटिड कैनाल. ठीक है. दिस इज़ कैरोटिड कैनाल. सो इफ़ आई पुट दिस probe into in this carotid canal, so you can see ये प्रोब मैंने कैरोटिड कैनाल में डाला और ये एपेक्स से बाहर निकल रहा है. ये एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन से बाहर निकल रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ योर कैरोटिड कैनाल. ठीक है. नाउ let us come to the posterior part of the norma besalis. posterior part वो वाला पार्ट है जो ये अगर एक आर्बिटरी मार्जिन हम ड्रॉ करें पासिंग थ्रू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम. ठीक है. उससे पिछला सारा इज़ योर posterior part. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द लार्जेस्ट फोरामेन इन द स्कल. दिस इज़ नोन एज फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम है सुपीरियरली इट ओपन्स इनटू द posterior cranial fossa. जैसे हमने इंफीरियर पार्ट ऑफ स्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इनटू एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, सेम वे हम क्रेनियल कैविटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज़ योर एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, दिस इज़ योर मिडल क्रेनियल फॉसा एंड दिस इज़ योर पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा. सो यू कैन सी द फोरामेन मैग्नम. इट इज़ opening superiorly into posterior cranial fossa and inferiorly it opens into the vertebral canal. You can see the foramen magnum, it is wider posteriorly. It is wider posteriorly than anteriorly. foramen magnum से पीछे यहाँ पे एक external occipital crest जाती है. ठीक है. foramen magnum के पीछे से एक external occipital crest जाती है till external occipital protuberance. This is your external occipital protuberance. You can feel this external occipital protuberance in living. It marks the junction of the scalp and neck. It marks the junction of the scalp and neck. Now, there are 2 nuchal lines. This is your superior nuchal line. ठीक है. This is your inferior nuchal line. The nuchal lines are curved ridges. The nuchal lines are curved ridges. The superior nuchal line, it extends from the external occipital protuberance. It extends from the external occipital protuberance, and the inferior nuchal line, it extends from the middle of the external occipital crest. Okay. So now let us come to another part. This is the condylar part of occipital bone. This is the condylar part of the occipital bone. ठीक है. It is going to articulate with the superior facets on the atlas vertebra. It is going to articulate with the atlas vertebra and it is going to form the atlanto-occipital joint. Atlanto-occipital joint. Now, at the junction of the petrous temporal bone and the occipital bone, there is a large foramen. There is a large foramen. This is your jugular foramina. This is your jugular foramina. So
this is your jugular foramina at the junction of petrous temporal bone and occipital bone. Now this is your anterior condylar canal or hypoglossal canal. This is your anterior condylar canal or hypoglossal canal. It is situated antero-superior to the occipital condyle. ठीक है. Then comes your posterior condylar canal. This is your posterior condylar canal. It is present in the condylar fossa. Just behind the occipital condyles is your condylar fossa, and the posterior condylar canal is present in the condylar fossa, right? So this is your styloid process. This is your styloid process. Just behind the styloid process is your stylomastoid foramen. This is your stylomastoid foramen, right? And this is your mastoid process. This is your mastoid process. This is your mastoid notch. This is your mastoid notch, and this is your occipital notch. ठीक है? This is mastoid notch and this is occipital notch. Now this is your jugular fossa. ये jugular foramen में this is your jugular fossa. ठीक है. In the posterior part of the jugular foramen, its anterior wall it is hollowed out to form jugular fossa. और jugular fossa में तुम्हारा superior bulb of internal jugular vein present होता है. ठीक है. jugular fossa में तुम्हारा superior bulb of internal jugular vein present होता है, and the right jugular fossa is larger than the left jugular fossa. You can appreciate this difference. The right jugular fossa is larger than the left jugular fossa. Now the lateral wall of the jugular fossa, you can see here, the lateral wall of jugular fossa is pierced one by one foramen. This is mastoid canaliculus. This is your mastoid canaliculus, right? Now in the thin bar of bone, this is the thin part of bone between the carotid canal, lower end of carotid canal, and the jugular fossa. Here is one foramen known as tympanic canaliculus. Known as tympanic canaliculus. Here is your tympanic canaliculus, right? अच्छा, अब जो तुम्हारी जगुलर फोरामेन है, इसके मीडियल वॉल में एक नॉच होती है. इसके मीडियल वॉल में अगर मैं सुपीरियरली देखूं, ये तुम्हारी जगुलर फोरामेन है. ठीक है. इसकी मीडियल वॉल में एक नॉच होती है. दिस नॉच इज़ नोन एज जगुलर नॉच. दिस नॉच इज़ नोन एज जगुलर नॉच. इस जगुलर नॉच की एपेक्स पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसको कॉक्लियर कैनालिकुलस कहते हैं. उसको कॉक्लियर कैनालिकुलस कहते हैं. ठीक है बच्चे, इस स्कल में थोड़ा अप्रिशिएट नहीं हो पा रहा. ठीक है. ये जैसे जगुलर नॉच है, इसकी एपेक्स पे कॉक्लियर कैनालिकुलस होती है. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द नॉर्मा बेसालिस. थैंक यू.